पार्टी है, ये वैल्यू है, इसमें CGST, IGST, SGST, it will auto populate in your GSTR 2A, and that data we can see, okay, these are the purchases, so that अगर सेट ऑफ क्लेम करना है तो जिसने सेल किया है उसी का मैं सेट ऑफ ले सकता हूं. कैन आई क्लेम सेट ऑफ उससे ज्यादा? राइट. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी सिस्टम ओरिएंटेड. वो सामने वाले ने सेल्स दिखाया है तो ही मेरे परचेज में आने वाला है. हाँ, अगर सामने वाला बोगस सेलर है, उसने मुझे सेल किया है, उसने नहीं दिखाया तो बात अलग है. या उसने गलती कर दिया, उसने मेरे टीम की जगह पे दूसरा टीम दिया. या दो सिनेरियोज आर पॉसिबल. ऐसा नहीं कि वो सिनेरियो नहीं पॉसिबल है. सो व्हाट वुड हैपन? विल माय क्रेडिट गो अवे? टेक्निकली नो, बेसिकली नो, इट शुड नॉट गो अवे. सो इफ द सेलर हैज not reflected the sales to one of his customers, when the auto populated data is coming in on the screen of the customer, he can either add, delete or modify that data. Right? Say if that person, उसका आदमी जब 10 तारीख को आदमी नहीं था तो उसने इनवॉइस अपलोड नहीं किया, भूल गया कि इनवॉइस अपलोड करने को 100 इनवॉइस में से. राइट? वो इनवॉइस किधर टेबल के अंदर रह गया, वो रह गया. राइट? सो हियर द पर्सन हु इज रिसीविंग that auto populated data, he can add, okay, I have made purchases from this person, that person has not shown, I should get the set off. Okay, so when this is done, again through the system a notice will go to the seller. अरे ये परचेजर ने आपका सेल्स दिखाया है, आपने क्यों नहीं सेल्स दिखाया? Right, this is go to the system. A time frame of 2 months will be given to the dealer to rectify that. Till that time this person will not get the credit, he will get a provisional credit. तब तक उनको प्रोविजनल क्रेडिट मिलेगा. इफ दैट पर्सन इज शोइंग द रिटर्न्स इन द रिटर्न्स, ही विल गेट द क्रेडिट, अदरवाइज ही विल नॉट गेट द क्रेडिट. राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी सिस्टम ऑर्डर. यस सर, यू हैड सम क्वेश्चन. या सर, वही बोल रहा हूँ अभी. आपका डेपो का क्वार्टरली रिटर्न एक्साइज का है ना, वो नहीं रहेगा. वही, दैट इज द बिगेस्ट चेंज, बिकॉज एक्साइज का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है अभी. वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बहुत बड़ा चेंज आने वाला है ये. राइट? देयर इज, ये जितने डेपोज हैं वो डेपो के रिटर्न नहीं फाइल करने हैं. ऑफ हाँ, यस यस यस. So there is that is a big problem today. What we understand based on what these provisions have come, what I understand is that each transaction can get uploaded on the system. For that transaction a unique ID will be generated for each sales invoice. Your transport wala can carry that invoice with that unique registered email ID. So it is not कि आपको 10 तारीख तक रुकना है. Let's understand one more thing. It is not necessary that you need to wait till 10th of May for filing your data of outward supplies. You can file it even on the day when you have made the sales. Right? It's an ongoing process. अभी क्या है, J1 J2 करते हैं तो end of 1 month we are doing it. It's not an online process, but here you can start uploading your data on daily basis also. Right? What would happen when your आज ट्रक रेडी है, महाराष्ट्र में है, कल गुजरात में जाना है, उसको मटेरियल लेके जाना है. टुडे व्हाट इज हैपनिंग एट द चेक पोस्ट, आवर्स एंड आवर्स आर लॉस्ट ऑफ दैट ट्रक वाला. दैट कॉस्ट इज गेटिंग एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. राइट? इट इज एनविसाज्ड दैट द वेटिंग टाइम ऑन ऑल दिस चेक पोस्ट विल गेट रिड्यूस्ड. पंजाब से अगर महाराष्ट्र तक आता है तो कितना दिन लगता है? 2-3 दिन निकल जाते हैं, 4 दिन निकल जाते हैं मटेरियल आते आते. नाउ दैट टाइम ऑफ द ट्रक वाला विल ऑल्सो रिड्यूस. वो रिड्यूस होगा तो उसका भी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा ना. अभी वो 4 दिन जा रहे हैं, 4 दिन का पैसा लग रहा है, वो 3 दिन में काम हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा. राइट? डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस एंड अदर्स. व्हाट दे आर प्रपोजिंग इज दैट अ यूनिक आईडी विल बी गिवन फॉर सच फॉर एनी ट्रांसफर ऑफ द गुड्स. इफ दैट यूनिक आईडी इज shown at the time of passing the check post, if it matches with the system, आपका ट्रक थ्रू आगे चला गया, because उसके सिस्टम में आपका ये डेटा ऑलरेडी आ जाएगा.
So it may not be form 403, 402 e-Subam, but it will be routed through such a system. लेकिन system तो रहेगा, check post का system रहेगा, entry tax नहीं रहेगा. I know various companies are paying huge amount of entry tax in other states. In some cases they are eligible for setup, somewhere not. लेकिन entry tax निकल जाएगा, so it will be a huge savings in cost, right Mahendra? Entry tax बहुत जा रहा है ना, बहुत जा रहा है, setup भी नहीं मिल रहा है, depending on the nature of transaction. उनका ट्रांजेक्शन ऐसा है कि वो सेट ऑफ नहीं मिल रहा, अदरवाइज एंट्री टैक्स का सेट ऑफ इज एलिजिबल, बट इन दैट सिनेरियोस एंट्री टैक्स सेट ऑफ इज आल्सो नॉट एलिजिबल, राइट? सो दैट विल बी अ कॉस्ट सेविंग टू द कंपनी एंड दैट इज व्हाट इज प्रपोज्ड इन द जीएसटी रिव्यू. सो जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाईज, जीएसटीआर 2 इनवर्ड सप्लाईज, and then the GSTR monthly return will get auto calculated. If you agree, say yes. If you don't agree, whatever modifications you want to make, you can make. It is not that you cannot make the modifications in that return, and you can file the return. So every dealers will be liable to file monthly returns. For the composition dealers, it will be quarterly return. Else, every dealer will be a dealer who is required to file monthly returns. Then apart from that, there are TDS returns, TCS returns are also there. For that also various dates have been given. I am not going into those dates. Then there are returns for casual taxable person. I think that we have not taken up. Casual taxable person is a person who is not having a place of business in a taxable territory. That is the definition. So what is that? Say I am a person who is, I am having a business in Maharashtra. I am having a place of business in Maharashtra. I want to go to Gujarat and sell some products. थैला लेके जाता हूँ माल बेचने के लिए उधर. I don't have a fixed place of business in that state, but I am going to go and sell goods in that state. So I am a casual taxable person in the state of Gujarat, right? For a casual taxable person, there are separate rules. They will have to obtain a registration separately as a casual taxable person. If it is a one-time activity, such persons will get a registration for 90 days. It can get further extended to 90 days if required. Otherwise, you take a regular dealer registration in that state. So such casual taxable person also will be liable for registration, and they will also be liable to file a return. They will have to pay advance tax before taking the number or at the time of taking the number registration. They will have to pay advance tax. They have to estimate, okay, this is going to be my sales and this is going to be my tax liability which I am going to pay on my sales which I make in that state, and such casual taxable persons will be liable for registration and payment of taxes. And there is an annual return which is to be filed by 31st December of the next year along with an audit report. So this will be the normal scenarios where taxes will be payable. Also, as we saw for the invoices matching, there is a matching of the debit notes and credit notes also, right? Similarly, if I have sold the goods for 1 lakh, subsequently as per a predetermined sale, I am giving a discount on that. It was an agreed discount कि भाई based on this policy of the company, if you sell goods worth rupees 1 crore, I will give you discount of 2%. Okay, तो 1 crore का sale कर दिया उसने, 2 lakh का discount दे दिया, so 2 lakhs discount is, so that person will issue a credit note. The seller will issue the credit note, the buyer will take it as a debit note. When that buyer reduces, because what has happened, on that 1 crore rupees, the buyer has already claimed set off on 1 crore. 1 crore पे 18 lakhs set off claim कर लिया है, right? Now I am issuing a credit note. So मेरा tax liability, seller का tax liability is going to get reduced by on 2 lakhs say 36,000 rupees. I will be able to reduce my liability only if the customer to whom I have sold the goods has reduced his input tax credit. That will be also routed through the system. I think the taxation team will have a lot of work in this. वो सिस्टम के साथ हर टाइम मैचिंग करना पड़ेगा, एक सेपरेट काम हो जाएगा टू मैचिंग ऑल दिस इनपुट एंड इनवर्ड एंड आउटवर्ड. या we have to raise the credit note debit note. So what is the time limit to raise the credit note or debit note? Credit note or debit note QAR transaction can be raised anytime up to 30th September from the end of that financial year. Means, say for 17-18, that is the first year of GST,
For 17-18, the debit credit note can be raised up to 30th of September 2018. Provided you are filing the annual return after 30th September. 31 दिसंबर का टाइम है, लेकिन आपका कंपनी बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट काम करता है और एनुअल रिटर्न उसने अगस्त में फाइल कर दिया, तो डेबिट क्रेडिट नोट का टाइम लिमिट अगस्त का है, राइट? सो आइदर 30th September from means 6 months from end of the year or before filing the annual return, whichever is earlier. It's not like that कि when the sale or the invoice date, from the invoice date the 6 month period. हाँ, वो वैट में है. Right. That is in there in VAT. नहीं, वो नहीं है. That is what we may have to unlearn so many concepts and relearn new concepts under the GST regime, right? Here is the 31st